Logic gates. There are three basic logic gates, namely AND gate, OR and NOT gate. These are the basic logic gates. This is a AND gate, and the truth table for AND gate is when both the inputs, this is A and this is B, these are the three basic gates. This is AND gate, this is OR gate, and this is NOT gate. AND and OR gate are two input gates, and NOT is only one input gate. Now we should study the truth table of all the three gates. When both the inputs are 0, the output of AND gate is 0. When 1 is 0 and the B is 1, the output is 0. When A is 1 and B is 0, the output is again 0. When both the inputs are 1, the output is 1. So AND gate is, the output is 1 when both the inputs are 1. So we can say the product A dot B is a AND gate. When A and B both are 1, the output will be 1. If either of one or both of them are 0, the output is going to be 0. Now for OR gate, when both the inputs are 0, the output is 0. When A is 0 and B is 1, the output is 1. When A is 1 and B is 0, the output is 1. And when both the inputs are 1, the output is again 1. So we can say there here A plus B is the operation. NOT gate, as it is only one input is there, so it can be 0 or 1. Say A is the input, so when A is the input, तो output will be 1. यहाँ पे भी A है input, output 1 है. जब input 1 है तो output 0 होगा. Okay. So NOT gate में जब एक ही इनपुट है तो आउटपुट 1 है. जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और जब 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो भी इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देता है. सो A स्लैश विल बी द आउटपुट. These are some other gates. NAND gate, the symbol is this. NOR gate, it is a OR gate with a NOT, a bubble here. This is an AND gate with a bubble here. XOR gate and XNOR gate. Now we will see the truth table of these gates. This is a truth table of NAND gate. This is the NAND gate. So when both the inputs are 0, 1, when the A is 0, B is 1, 1, A is 1, B is 0, 1, both the inputs are 0, 1, then output is 0. So it resembles A dot B, जो कि AND गेट का है. इसको अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो ये NAND गेट का ट्रुथ टेबल बन जाता है. NOR गेट का ट्रुथ टेबल इज A प्लस B, जो कि OR गेट है. इसको अगर हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये NOR गेट हो जाएगा. XOR is A B bar plus A bar B, and XNOR is A bar B bar dot A B.
So this is a truth table of NAND gate, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. Out of all the gates, NAND gate and NOR gate are the universal gates. इन्हें यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि NAND गेट और NOR गेट से हम बाकी के सारे गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि हाउ NAND गेट और NOR गेट से दूसरे गेट्स बनाए जाते हैं. We will prove here that NAND gate is a universal gate. We will see one by one how NAND gate can implement other gates. This is a NAND gate. Both the inputs of the NAND gate is shorted and given one input. It becomes a NOT gate. See, suppose A is the input. This and this terminal is also A. जब NAND गेट को इक्वल इनपुट्स देते हैं तो आउटपुट उसका इन्वर्ट मिलेगा. अगर दोनों 1 1 है तो आउटपुट 0 है. अगर A 1 है तो आउटपुट 0 है और दोनों 0 है तो आउटपुट 1 है. सो व्हेन A is the input, A slash is the output. So it is a NOT gate. This is the NAND gate. NAND गेट को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो वो AND गेट बन जाता है. तो एक NAND गेट के साथ NOT गेट लग गया तो आउटपुट पे मुझे AND गेट का ट्रूथ टेबल मिलेगा. सो A, B are the inputs here. A and B are the inputs. Output of this will be A dot B slash और यहाँ पे मुझे मिलेगा A dot B जो कि एक AND गेट है. This is how we can make a OR gate using NAND gates. A and B are the two inputs. ये NOT gate है, ये दूसरा NOT gate है. तो A is the input तो इसका आउटपुट A स्लैश होगा. B is the input here तो इसका आउटपुट B स्लैश होगा. Here the output will be A slash dot B slash, ये होल स्लैश होगा. नाउ यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम A प्लस स्लैश का स्लैश इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे तो A प्लस B. सो A प्लस B इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR gate. A plus B represent OR gate. This is a XOR gate which is implemented by using NAND gates. A and B are the two inputs here. Here the output of this gate will be A dot B slash. The output here will be A dot A B slash and this. Here it will be B dot A B. The output, the final output of this combination is A dot A B slash dot B dot A B. ये पूरा स्लैश. When we will solve it. It will give me the XOR gate. Boolean एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद we will get this. ये बार को हटाया तो डी मॉर्गन से हम लगा के ये पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा. इसको ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर ये बच जाएगा. we'll use again डी मॉर्गन थ्योरम तो मुझे ये मिल जाएगा. प्रोडक्ट इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो A बार आएगा विच इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे B बार आएगा. इट इज अगेन 1 तो रह जाएगा A बार प्लस A बार B. NOR gate is another universal gate and
various other gates can be implemented by NOR gate. ये NOT gate है. NOR gate के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे. If A is the input, output A bar मिलेगा. This is OR gate using NOR gates. एक और गेट के आगे एक NOT गेट लगा देते हैं तो हमें A प्लस B मिलने लगेगा. This is AND gate using NOR gate. Output is A dot B. And this is XOR gate using NAND gates. The output is A B bar plus A bar B. XNOR लाने के लिए if we connect a NOT gate, यहाँ पे अगर हम एक NOT gate लगाते हैं तो हमें XNOR मिलने लगेगा. So hence proved that NOR gate and NAND gate are universal gates.